Okay, so let's start the deciphering the tag value. Which tag value? So in the exam, you will provided such kind of value that decipher the tag. Either it should be decode the tag, and yes, यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं किया गया कि यूजिंग अर्थमेटिक कोडिंग, तो आपको समझ जाना है कि इट इज यूजिंग अर्थमेटिक कोडिंग. ओके, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पे भी टैग वैल्यू का यूज नहीं होता है इन अर्थमेटिक कोडिंग के सिवाय. So every time if the question is in a single line that decipher the tag value, this is the tag value by 4 sequence. Okay, तो उसने पहले ही बता दिया है कि मेरी जो सीक्वेंस की लेंथ है वो कितनी होने वाली है, 4. Then they have already provided either probabilities, either the cumulative probabilities. Okay, अगर उन्होंने पहले से ही प्रोवाइड कर दी है probabilities, तो you need to find out these cumulative probabilities. Otherwise directly वो आपको cumulative probability provide करेंगे in the form of fx of 1 equal to 0.8, fx of 2 equal to 0.82, and fx of 3 equal to 1.0, or either you can say the summation of all. Okay, so this is all about the sum which they have given to you. So पहले आपको क्लियर कर दूं, we are deciphering this tag value which we have got earlier. ठीक है, हमने earlier जो tag value figure out की थी वही tag value हम deciphering करने जा रहे हैं. You can see over here that is 0.772352, 0.772352 to revert back my original sequence that is 1321. उसी को मैं get back करने जा रहा हूँ. ये अभी मेरे लिए unknown है, ये अभी मेरे लिए क्या है, unknown है. Okay, so let's try to work out with the sum. In deciphering section, how this deciphering can be take place over here, it should be done with respect to that manner. Let's start with initial value. Okay, so like step 1 if I can say, or step 0 if I can say, L0 equal to 0 and U0 equal to 1. Okay, by default you need to fix out those initial value, or again I can make it connection, like this way. L0 equal to 0, L to the power 0 equal to 0, and U to the power 0 equal to 1. This is my basic thumb rule before starting any specification over there. Okay, now let's try to solve the next phase. Next phase, what they have said, putting n equal to 1. Putting n equal to 1. Or you can say, you can just calculate the same formula. Using that same formula, you need to start with step 1. Which formula? That is L to the power n, Ln minus 1 plus U की power n minus 1 and की power n minus 1 multiply fx xn minus 1. xn minus 1. Now, start with n equal to 1. n equal to 1 के लिए हम figure out करेंगे. So here it is L to the power 1, then L to the power 0, U to the power 0 minus L की power 0, multiply fx xn minus 1. Right now we can put like this way. Calculating the value, so it is 1 minus 0 multiply fx xn minus 1. So L1 should be directly fx xn minus 1. So this is my first formula I have got. The same thing अगर मैं calculate करने जाऊँ, I am just making assumption for the u की power n. ठीक है, here I have go for l की power n. It is again l minus 1 plus u की power n minus 1 minus l की power n minus 1 multiply fx xn. Just putting the value to u0 equal u1 equal to l to the power 0 plus u की power 0 l की power 0 fx xn. Simply substituting the value, and u1 will give me in the form of xn. मुझे ये दो फॉर्म मिल जाए. ठीक है, so this is my very first step to got out those values or those generalized equation in the form of L1 is equal to fx xn minus 1, and yes, over here u1 is equal to xn fx xn. Okay, now what you need to do, now you need to do the assumption. Okay, अब कौन सा assumption यहाँ पे आपको करना है, so let's check it out over here. Suppose xn की value 1 है, so this is my very first assumption.
xn की वैल्यू 1 है तो क्या? ओके, नाउ आप बोलोगे सर अजम्पशन 1 से ही क्यों स्टार्ट किया है? तो इट शुड बी अ न्यूमेरिकल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्थमेटिक जो कोडिंग हो अभी हम कर रहे हैं, यस ओवर हियर यू कैन सी इट इज अ न्यूमेरिकल सीक्वेंस। ठीक है, हम न्यूमेरिकल सीक्वेंस के लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल सीक्वेंस के लिए अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो सीक्वेंस बनने वाला है वो वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी? बट ऑब्वियस इट इज 1। सो एक्सएन की वैल्यू या जो भी सीक्वेंस बनने वाला है, जो मैंने आपको अभी वेरी फर्स्ट ऑफ द लेक्चर आई हैव जस्ट कंसीडर कि xn इज व्हाट, इट इज x1 x2 x3 एंड x4 लाइक दिस वे। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बनने वाला है वो न्यूमेरिक सीक्वेंस बनने वाला है। तो आई नीड टू स्टार्ट द अजम्पशन फॉर वेरी फर्स्ट कि xn का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 हो सकता है या नहीं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अज्यूम xn इक्वल टू 1। अगर xn इक्वल टू 1 है देन ओके, if xn equal to 1 then what should be the value of L1, or I can say equation 1 and equation 2. Let suppose xn equal to 1, then what is the value of L1? It is fx 1 minus 1, that is fx 0, and u1, that is fx 1, and I hope it is 1. Yeah, okay, till now anyone have any doubt? ये कैसा आया? दो वैल्यू क्लियर हुई। वी हैव पुट अ अजम्पशन ऑफ xn इक्वल टू 1, xn इक्वल टू 1 है, तब L1 की वैल्यू और U1 की वैल्यू क्या है? ओके, so जब हमने फिगर आउट किया तो वी हैव गॉट x of 0 and x of 1 over here. Now what is the x of 0? fx of 0 क्या है? Can anyone tell me? 0. Yes, thank you. Yes, it is 0. It is 0. And what about fx1? 0.8. 0.8. Thank you. So what I get over here, I got one interval again in the form of 0 and 0.8. Yes, so you can see over here, calculation साथ में बता रहा हूँ, you will get such kind of interval. So what the interval said that 0 and 0.8, it should be the value of my L1 and U1. My interval has been like this way. Now after this, what you need to check out कि जो टैग वैल्यू मुझे गिवन है, जो टैग वैल्यू मुझे गिवन है वो इस इंटरवल में लाई करती है। इफ आस्किंग फ्रॉम यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये जो इंटरवल है इसके अंदर ये मेरी टैग वैल्यू जो गिवन है वो लाई करती है? यस और नो? Yes, sir. यस, ओके। सो हेंस आई कैन कंक्लूड दैट कि एक्सएन में या फिर जो मेरा सीक्वेंस होगा उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा नहीं, बट यस, ओवर हियर माय फर्स्ट एलिमेंट विल बी, or first sequence value will be 1. So you need to write down some statement over here. Which statement? Yes, here you can see tag value. Tag value is lie between this range. So my tag value is what? 0.7732. Okay, 0.772352 is lie between this range. So my first number, first sequence is 1. So you need to highlight this way. This is my very first sequence. So this is my first decoded symbol. Yes. Anyone have any doubt in this step? कोई question, कोई confusion, please. Okay. I have solved those questions in the which manner. First of all, हमें इतना गिवन होगा जिसमें टैग वैल्यू होगी, कहां तक फिगर आउट करना है वो गिवन होगा, सबकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, आइदर सबकी प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ, एंड ठीक है, प्रोबेबिलिटी गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट दिस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ 0.8, 0.82 एंड 1.0. Then my initialized step, or you can say my step 0, that is L to the power 0 equal to 0 initial value, and U to the power 0 is 1. Then the same formula, तो आपको जो साइफरिंग के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा था या एनकोडिंग के लिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा था वही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट होगा फॉर U के लिए और N के लिए, सॉरी L to the power N के लिए and U की पावर N के लिए. So this is formula I have
figure out just substituting the value of n by taking n equal to 1, n की वैल्यू 1 लेके हम सॉल्व आउट करेंगे, तो हमें एक जनरलाइज टर्म मिलेगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के फॉर्म में। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, अजम्पशन बेस पे फिगर आउट करेंगे कि क्या xn की वैल्यू 1 हो सकती है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। अगर हो सकती है तो हमें एक टैग वैल्यू मिली, सॉरी हमें एक इंटरवल मिलता है दैट इज 0 to 0.8। नाउ माय नेक्स्ट अजम्पशन और नेक्स्ट व्हाट कैन आई से consideration, that is this tag value is lie between these two interval. Yes, my condition is true over here, hence my very first letter decoded sequence is what, 1. Okay, so you need to mention over here that statement that tag value is lie between this range, so my first number is 1. I hope it is clear with you. Okay, moving for the next step, that is my step 2. Okay, in step 2, till now I just figure out x1, x2, x3 and x4, that is my xn, and मेरा first decode हो चुका है। Okay, x2 that is again the symbol n की वैल्यू 2 के लिए हम फिगर आउट करेंगे, n की वैल्यू 2 के लिए हम फिगर आउट करेंगे। So what should be my n equal to 2? So let's put the equation L equal to 2 L1 u1 minus L1 multiply fx xn minus 1। okay, same way अगर मैं u की वैल्यू फिगर आउट करूँ तो इट इज u की पावर 2 L1 u1 minus L1 multiply fx xn। okay, this is my fx and this is my xn। yes, what is my L1? so previously जो मुझे L1 और u1 मिला था उसे मैं साथ साथ में लेके चलता हूँ, so that will help it out। it is 0 and 0.8, so I can substitute this value। okay, I can substitute this value, so that is 0 plus 0.8 minus 0 multiply fx xn minus 1 xn minus 1। so hence I have got here that is 0.8 fx xn minus 1, that is my equation you can put as a 3। and if I'm figure outing for this value, it is again the same thing, 0.8 minus 0 fx xn, it will give me 0.8 fx xn, my equation 4, that is my u2। okay, so I have got two generalized equation again। okay, now what is my next step? Can anyone tell me, or anyone have assumed it? क्या हो सकता है next step? Sir, supposing from x2 equals to 1 to until we get answer. okay, it's n की perfect। वैल्यू 2 है हमारे पास, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं दीप नहीं, अजम्पशन हमें से वापस से हमें क्या कह सकते हैं गुजराती में, एकड़े एक थी चालू करूं ऊपर से। ओके, तो इट इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट वैल्यू, दैट इज पॉसिबल है कि भाई x का कोई ऐसा सीक्वेंस आ जाए 1 1 2 1 लाइक दिस वे। ठीक है, अभी तो हमको आंसर पता है 1 3 2 1, दैट्स व्हाई हम उसको ऑर्डर में जा रहे हैं, पर हमको आंसर जब नहीं पता होगा एग्जाम में, सो एट दैट टाइम यू नीड टू एवरी टाइम चेक आउट, एवरी टाइम यू नीड टू स्टार्ट दैट सपोजिंग xn इक्वल टू 1, हमेशा आपको xn की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी होगी, 1 से। ओके, सो इज इट ओके गाइस? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? okay, so let's suppose my xn equal to 1, hence my what is L2 and what is my u2? just I have that calci, I can put 0.8 into xn, it is 1 minus 1, that is 0, and it is 0.8 fx1 fx1, I don't think so it is needed। what is my fx of 0? I have already put it is 0, it is 0, and what is my this one, what is my fx of 1? I think it is 0.08, yes, it is 0.08, fine, so it will give me 0.64। so what interval I got over here?
it is 0 to 0.64, the interval I have got over here. Now the next thing, does my tag value is lie between these two interval? And next question, does this tag value lie between these two intervals? Yes, Ashish, Yes, sir, it lies. it lies, sure. Yes, sir. Can you Okay, my can I see tag the value. range again, sir? Yeah, I can just give you the tag value, then you can predict. This is my tag value. Okay, so no, sir. It It's is not not lying. lie. Yeah, perfect. So hence we can write down one statement that tag value is not lie between these range. तो L2 और U2 की वैल्यू ये रेंज नहीं हो सकती है, ये इंटरवल नहीं हो सकता है. तो हमें L2 और U2 की नई वैल्यू फिगर आउट करनी पड़ेगी बाय न्यू अजम्पशन दैट इज xn इक्वल टू 2 के लिए. xn equal to 2 के लिए. So here you can write down the statement tag value not lie between this interval. Okay, my handwriting is very bad, so please try to assume through my words. Tag value is not lie between this interval. Hence, suppose again, new suppose we need to start, that is xn equal to 2 के लिए. So again L2 0.L मैं थोड़ा शॉर्टकट भी करूंगा यहाँ पे, that is 2 minus 1. If you need to write down, चलो ठीक है, थोड़ा systematic step हो जाएगा. It is 1 and yes, U2 will be 0.2 fx2. Okay, here I'm just trying to calculating the value जिसमें अभी ये previously calculate किया है, तो मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिख सकता हूँ. It will give me 0.64 and here it is 0.8 multiply 0.82. अब आप बोलोगे 0.82 कहाँ से आया? So I hope it is clear with you. Where fx is equal to 0.8, fx2 equal to 0.82 and fx3 equal to 1. ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है? So I'm just trying to calculate this value. 0.8 multiply 0.82. Okay, it will give me 0.656. Yes, 0.656. My new interval get 0.64 to 0.656. Again, what is the observation? Again not lie. ठीक है, इसको शॉर्टकट में खत्म करता हूँ. Not lie. Go for next sequence. Okay, go for next sequence. So again, here we have supposed already xn equal to 1, xn equal to 2. Now my next assumption, it should be xn equal to 3. So okay, over here you can see xn equal to 3. अगर मैं xn equal to 3 कंसीडर करता हूं, तो what is my L2, that is 0.8 into fx xn minus 1 and u2 था मेरा 0.8 fx xn. Okay, so here you can see okay, so now xn की वैल्यू अब मैं क्या पुट करूंगा, 3 के लिए कंसीडरेशन करूंगा. So over here you can see 0.8 is multiplied by 0.8 into 0.82. Why? Because यहाँ पे xn की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, fx into 3 minus 1. 0.8 into fx2. Here I have got this value, and if I'm calculating this one, that is 0.8 into 0.82, it is giving me 0.656, जो मैंने अभी earlier calculate किया था, which is the value of L2. Sorry, थोड़ा मैंने इसको workout किया इस तरीके से. And the same way U2 की वैल्यू अगर मैं figure out करने जाऊंगा, तो it will give me 0.8 into fx3. 0.8 fx of 3 की वैल्यू कितनी है, 1. It will give me 0.8 of u2. So my interval will be 0.656 comma 0.8. So does my tag value
lie between this range or interval? So my answer is, I hope it is yes. My answer is yes. Again मैं write down कर देता हूँ tag value 0.772356. So this is my tag value जिसे मुझे workout करना है. Okay, so yes, so hence I can say my x2 will be, so here you can see my x2 will be, or xn का जो next symbol था, that is x2 will be 3. So till now I have calculated x1, x2, x3 and x4. So here it is 1, here it is 3, question mark, still to figure out. Okay, so hence I have decoded my next symbol, that is 3. Okay, anyone have any doubt? Is it clear, guys? Yes, sir. Okay, now guys, थोड़ा मुझे relaxation दो, या फिर मैं थोड़ा workout करता हूँ. xn equal to 3 के लिए. Now, which value we need to figure out? xn equal to 3. So here you can see xn equal to 3 के लिए अगर मैं figure out करता हूँ, तो what should be my step? So l की power 3. Okay, और यहाँ पे l2 और u2 क्या हो जाएगा? What is my l2 and u2? The recent range which I have calculated, that is 656 into 0.8. ठीक है, क्यों? क्योंकि इस रेंज में ही मेरा टैग वैल्यू लाई कर रहा है. बाकी दोनों ना इस L2 और U2 के लिए लाई कर रहा है, ना इस L2 और U2 के लिए लाई कर रहा है. Hence, what can I do? I can, जहां पे मेरा सिंबल अकर हुआ है, that is 3. Okay, किस रेंज में अकर हुआ है, तो I need to consider L2 and U2 this value only. ठीक है. So whenever we are calculating this value, that is L3, so L3 is equal to L2 plus U2 minus L2. It is again multiply F. Okay, Fx xn minus 1 Fx xn. Okay, you can simply put 0.56 to calculating the value of yes L2 एंड U3 की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो चलेगा. क्यों? क्योंकि चेंजेस कहाँ पे खाली कहाँ है, यहीं पे खाली इक्वेशन पे यहाँ पे चेंज है, दैट इज fx इज इक्वल टू, सॉरी fx xn में खाली चेंज है, यहाँ पे fx xn minus 1 है, दैट्स इट. सो आई होप इतना सिनेरियो सबको क्लियर है. देन स्टार्ट योर assumption, which is very first value, that is suppose xn equal to 1. if xn equal to 1 है तो if xn equal to 1 है तो you need to calculate the value of L3. So L3 is equal to 0.56 plus 0.144 into 0. Okay, from where 0 come? I hope it is clear. Prince is there. 18 series 48. Prince, are you there? Okay. Those who don't want to listen up me, please don't join the session. Okay. Prince, last time I'm calling you. Are you there? Yes, sir. Okay, उठ गए? नहीं सर. अच्छा, नहीं उठे, सो रहे हो अभी ऐसा? नहीं सर. ये जीरो कहाँ से आया, खाली मुझे इतना बता दो, फिर वापस सो जाओ. चलो, from where I got this 0? आता है नहीं आता है वो भी क्लियर कर दो तो हम आगे चलें. नहीं आता सर. नहीं आता, ठीक है. Here you can see xn minus 1 है, ठीक है. L3 की वैल्यू हम फिगर आउट कर रहे हैं, तो इट इज f of x xn minus 1. तो xn की वैल्यू क्या हम अज्यूम कर रहे हैं अभी राइट नाउ? 1 अज्यूम कर रहे हैं प्रिंस? हाँ सर, 1 minus 1 0. वाओ, चलो गुड. इट इज 1 minus 1 0. आई होप एवरीवन इज क्लियर. थैंक यू प्रिंस. ओके. सॉरी. तो fx of 0 ऑलरेडी वी गॉट टू नो, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0. तो 0 multiplies 0.144 will give you 0 and
Hence L3 की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.656. Just try to figure out U3. What is my U3? Your U3 will be the same thing over here. Xn की वैल्यू यहाँ पे 1 है. Okay, I hope it is clear. Rutu, that 24. ये 1 कहाँ से आया? वो xn की वैल्यू हमने 1 ली थी. Okay, but it is L3 और U3 किसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं हम अभी? ये U3 का कर रहे हैं. U3. Okay, perfect. So hence xn की वैल्यू 1 अज्यूम की, इसलिए यहाँ पे 1 आया. चलो, thank you Rutu. Okay, so hence it is 1. Fx of 1 की वैल्यू 0.8 है. I hope yes. So just do the simple mathematical rule over here, that is 0.44 multiply 0.8 will give you 0.7712. Okay, 0.7712. I'm just recalling for you that tag value. That tag value थी मेरी, that is 0.772356. This is my tag value. So does my tag value lie between these two range? Yes. Janam 27. No, sir. Okay, perfectly. It is not, because it is near to there, but not exactly. 0.7712 है और यहाँ पे 7723 है. Hence, my assumption is very much clear that tag value is not lie between this interval. Okay, so tag value मेरे इस interval में fall नहीं करती है. मेरी first next step क्या होगा? Joy 33. Sir, xn की वैल्यू 2 सपोज करेंगे. Okay, so this is very much simple. Xn की वैल्यू 2 assume करेंगे. Just find out the value of by putting the same equation. Xn की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी है, तो 2 minus 1, that is 1 आ जाएगा. It will give you 0.7712. जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी वही यहाँ पे मिलेगी. जो प्रीवियस वाली U3 की वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे मिल रही है. सो आप देख सकते हो कि थोड़े आंसर्स आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिल जाएंगे, पर ठीक है, डोंट मेस अप, थोड़ा मिक्सअप मत करना इसमें, एंड जस्ट ट्राई टू वर्कआउट विथ एटलीस्ट कैलकुलेटिंग दिस इक्वेशंस. So here is L3 will be 0.7712, and what about U3? Okay, so here U3 will be F2, fx of 2. Fx of 2 will give you 0.82, and you just calculate those value. And again, my same question: will my tag value is lie between these two range? Preeti? Yes sir. Lie होती है? Sure. Yes sir. Okay, yes, it is lie between these two value. Hence, my xn जो next था sequence वो cover up किस form में होगा? It should be decoded in the second manner, where x1, x2 and x3 I have already decoded 1, 3 and 2. x4 अभी भी मेरा बाकी है. Okay, after step 3. Same way, step 4 थोड़ा easy होगा क्योंकि मुझे already पता है कि decoded symbol 1 है. So n equal to 4 के लिए हम figure out करेंगे. If I am calculating n equal to 4, at that time you can see L4 L3 plus U3 minus L3 multiply Fn, Fx xn minus 1. Then you can calculate it same for U4. Yes, now here the new interval will be 0.7712, or I can say the value of L3 and U3 will be 0.7712 and 0.77408. Using this, we are trying to calculate L4 and U4. L4 and U4 यहाँ calculate करेंगे. Let's start with this assumption very first, that is xn equal to 1. Just try to figure out. अगर हम 1 रखते हैं तो 1 minus 1 0, f of 0 की वैल्यू 0 है, तो ये डायरेक्टली टर्म 0 हो जाएगा. तो डायरेक्टली गाइस इसको सब्ट्रैक्ट करने मत जाना, ठीक है? डायरेक्टली अगर वो 0 हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करना इसमें कि सब्ट्रैक्टिंग दिस वैल्यू, एंड एट लास्ट यू विल गेट द 0 ऑफ दैट पार्ट. ठीक है, so try some smart work over there. Same way for U4 you are getting
0.773504, and hence the interval which is lie between this thing. So yes, my interval is considered over here. Okay, so interval lie between this tag value. Yes, so my next decoded symbol is 1. So yes, my next decoded symbol after step 4, it is this one. So this is my whole string which I have decoded, that is 132